मिक्स मार्शल आर्ट एक शैली है जो फाइट है, उसकी फ़ाइट होने जा रही है MFN16 के नाम से। ये MFN16 जो फाइट है वो श्रॉफ परिवार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आयशा श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ जो है उनकी डॉटर टाइगर श्रॉफ की जो है वो मदर और उनकी जो सिस्टर है कृष्णा श्रॉफ, उनके द्वारा इस फाइट का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में इस फाइट का आयोजन होगा। कुल 13 फाइट्स होंगी जिसमें 26 जो है वो प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वो सभी आज यहाँ दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं कि क्या कहा। Just put the mics up there. That being said, can you hear me? That being said, I had a few things that I wanted to put across because I think the time is right to say this. It's a very good thing that the eyes of the world are now actually on India and in a small way on MFN, being the forerunner for MMA, for Indian MMA. So I think what I have to say here is important, and I would love for you to pay heed to this, really. I've made some notes because I didn't want to forget. I just want to say that the MFN matchmakers put matchups in place after analyzing all aspects. So it's quite surprising that many fighters turn fights down. We are here to build Indian fighters and not here to provide tomato cans in order to pad your records. MFN here is here to showcase the best of our talent to the world. So going forward, if we are put in a situation where we feel a fighter and or his coach turn down a fight with good reason, we will be obliged to cut that fighter from the MFN roster. I think fighters and coaches should be aware that the big global promotions are looking for fighters that they believe have an X factor to bring to the cage. And they all know well enough to recognize records without merit. I'm sure all the coaches in this room know exactly what I'm talking about. Indian coaches should in fact be asking MFN to test their fighters against tough international opponents. A shift is required back to a higher level now. We need our signed fighters to be hungry and confident enough to take on anybody, anytime. MFN is not an option. If you are signed to MFN, you are an MFN fighter for our promotion. We will no longer be giving NOCs unless we feel it brings value mutually. Fighters should also take the time to actually read their contracts. We haven't been very strictly enforcing the contracts until now, but I think we are now at a stage where we will need to take this seriously for the betterment of the promotion, but more importantly for the betterment of all the fighters. Going forward also, fighter payouts will be performance-based. So if for example, you don't perform well and we offer you a fight in another event, please don't come back to us and say, oh, where's the increase in the pay? If you don't perform well, you're not going to get an increase. It's as simple as that. The last thing I'd like to say is that the MMA community in India is new and relatively small. So instead of spreading hate and negativity, it would be great if we could see a bit more support for our fighters and our officials and all those who are actually walking the bloody talk. Again, I'm sure you all know who this is directed to. There is only place for constructive criticism on this platform. That being said, I would like to wish all our fighters the very best for tomorrow. God bless you all. Thank you so much. Reinforcements now ready for the new if you need them. Jono Masti Khalifa!
Champion Zaurşo! Champion Zaurşo! Zindabad Afghanistan! Champion Zaurşo! Champion! Champion Zaurşo! Zindabad Khalifa! Hey! Hey, Tajikistan Afghan! Zindabad! Khalifa! Zindabad Zaurşo! Zavur! 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 Tajikistan में पास! All right, gentlemen, thank you. Moving on to the next fight. क्या है थोड़ा फाइट के बारे में बताइए, क्या है इस फाइट? ये देखिए कल रात को होने वाला है ये श्री फोर्ट में, और ये MFN16 है, और कुश्ती, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ों का मिलन MMA होता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो श्रॉफ परिवार है इसमें, काफ़ी सालों से प्रमोशन करते आया है, पैसा डालते आया है, और बहुत ज़रूरी है ऐसे बड़े परिवार की जो इसको प्रमोट करे। टाइगर, कृष्णा एंड आयशा मैम एंड जग्गू दादा भी कल दिखाई देंगे। तो पूरा जी जान लगा दी उन्होंने। सारे फाइटर्स आपने देखे अलग अलग शहरों के आते हैं, और बस इसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स को। अच्छा, पिछली अगर हम बात करें तो जो 15 हुआ था उसके बारे में, उससे पहले जो हुआ वो उसकी सफलता कैसी रही? यार सफलता पता है क्या है, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा स्पॉन्सर मैंने कभी नहीं देखे हैं। सफलता आपको तब से पता लगती है कि अगर ज़्यादा स्पॉन्सर अगले वाले में आ जाए। और हमने नोएडा इंटरनेशनल स्टेडियम में किया था, 10,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे देखने के लिए। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं करीबन 500 लोग तो आ गए हैं, और फैंस ऐसे ही आते हैं यार। और जैसे ज़्यादा स्पॉन्सर आ जाए, ज़्यादा पैसा आ जाए, खर्चे तो बहुत होते हैं। आप कहते हैं अगर IPL में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वो प्रोडक्शन वैल्यू होता है, सेम हमारा भी होता है। सो प्रोडक्शन वैल्यू उतनी रहती है, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा फैंस इंटरेस्टेड होंगे, उतने ज़्यादा स्पॉन्सर इंटरेस्टेड होंगे। तो कोशिश हमारी यही रहती है मेरे ख्याल से MFN16। यार 13 फाइट होंगी रात को, और ये शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा जियो हॉटस्टार पर, और रात के 11 बजे तक चलेगा। ये तो कंफर्म। विनर रहेगा उसके लिए क्या प्राइस बनी है? सबके अलग अलग प्राइस मनी रहती है, लेकिन मोटा प्राइस मनी रहता है। उसमें डिटेल में नहीं आते हैं, बट यू कैन से साउथ ईस्ट एशिया में इतनी प्राइस मनी कोई फाइट्स में नहीं होती है जितनी MFN में होती है। ये सिर्फ एक दिवसीय है, एक दिन में? हाँ, साल में 3 या 4 बार होता है ये, और एक रात की ही फाइट्स होती है, तभी मैट्रिक्स फाइट नाइट होता है। एक रात में ही सब खत्म हो जाता है।